I really feel that they've given a lot of importance to a member of the film fraternity, a fraternity that I believe has always lent a very valuable hand in bringing this country together, in keeping us closely knit together. I've always felt that Indian cinema has had various qualities, despite all the cynicism and the criticism that we often face. But when we buy a ticket to get inside a cinema hall, we never ask who the person sitting next to it is going to be. Is he going to be a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Isai, or what the color of his skin is, or what his caste is? But we all enjoy the same film. We all laugh at the same jokes, we sing the same songs, we cry at the same emotion. I don't know whether this is apt to say this, but perhaps in our country today there are very few institutions left that can bring about this very unique integration, that within the confines of a dark hall where all communities sit together and enjoy a similar kind of content. How wonderful then that the film industry, along with so many other valued individuals of this country, have put their voice together in making this wonderful song of India that is going to be released today. मेरा ऐसा मानना है कि इस गीत का जो शीर्षक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसमें सुर शब्द का जो इस्तेमाल है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय संगीत का जब सही सुर लगता है तो आत्मा से परमात्मा एक अनदेखी तार के साथ जुड़ जाता है। और आज मेरा ऐसा मानना है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा भी एक ऐसा गीत है जहां पर हम सब के तार एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वो सभी तार परमात्मा के साथ मिलेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में ऐसे मूल्यवान लोगों की बहुत आवश्यकता है जो इस तरह से सोचते हैं और सोचते हैं कि इस देश को एक होकर के रहना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बधाई देता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया को और कैलाश को और आरती को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस गीत को संजोया है, पिरोया है और इस बहुत ही खूबसूरत तार को जीवित रखा है।